हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो एक सेशन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस पर। तो इसमें बेसिकली ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अब उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में, जिसमें इंटेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। तो तमाम के तमाम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको एक साथ हम डिस्कशन करने जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा समझने में। जो हमने रिफ्लेक्शन के थ्योरी पार्ट किए थे तो उसको समझने में हमें आसानी मिलेगी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो पेज नंबर 142 से लिया गया। याद रखेंगे कि हम यहाँ पर जो भी पेज नंबर डाल रहे हैं वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, न्यू बुक को हम फॉलो करें, तो आप भी न्यू बुक को देखकर ही उसमें पेज नंबर में फाइंड कर सकते हैं सेम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द फोकल लेंथ। दैट्स सो इजी, हमें मालूम है कि जो फोकल लेंथ होता है रिलेशन क्या है रेडियस और फोकल लेंथ में। तो देखिए हमने जाना था वहां पे, हम पहले इसको लिख लेंगे कि यहाँ पे दिया क्या है। सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ वह है 20 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है कि फोकल लेंथ क्या है। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस इज f इज इक्वल टू r बाई 2। सो यहाँ पे r कितना दिया हुआ 20 है, सो वी कैन राइट हियर 20/2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए। दिस इज सो इजी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, f इज इक्वल टू r बाई 2। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। इसको दूसरे टाइप से हम फॉर्मूला यू भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2f। दोनों भी सेम ही फॉर्मूला है, दोनों से भी आप यूज करके फाइंड कर सकते हैं आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मतलब समझते हैं आप, हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज रेयर लाइक द साइड मिरर है, पार्किंग मिरर है। On an automobile has a radius of curvature of 3.00 means 3 meter. Here 00 means nothing, so 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. ये example question है 9.1 जो कि पेज नंबर 144 पर दिया है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 3 मीटर। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने जो एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर है। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो दिया हुआ है 5 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, पोजीशन फाइंड करना है। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किसे डिनोट करते हैं, वी से, सो वी फाइंड करना है। एंड ऑल्सो नेचर एंड द साइज वी हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ये क्या है, सबसे पहले ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर का नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि कौन सा मिरर दिया हुआ है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, वी नो दैट कि फॉर द कॉन्वेक्स मिरर रेडियस इज प्लस, पॉजिटिव, and u is always negative. Yes, now what is the mirror formula I will use here, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। ये मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। अब v की जगह पर हम v हैव टू फाइंड, सो व्हाट विल बी हियर, f इज इक्वल टू माइनस 1 by f माइनस 1 by u। चलिए आगे अब इसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, सो वी विल गेट 1 by v इज इक्वल टू f कितना है, सो नॉट गिवन, सो वी कैन राइट हियर f इज इक्वल टू r by 2, दैट मीन्स 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 एंड माइनस 1 by माइनस 5 बिकॉज द u इज नेगेटिव। सो 1 by v इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो दिस विल बी 2/3 एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी 1 by प्लस।
1 by 5. So here we can write 3 plus 5, LCM of 3 and 5 is 15. Okay, so 3 5 is 15, 2 5 is 10, and 5 3 is 3. This is equal to 13 by 15. Now the V is equal to, बिकॉज ये 1/v दिया हुआ है, जब भी हम v फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. सो दिस विल बी 15/13, एंड जब इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट समथिंग 1.13 1 13, so 2 again 1, so it will be 70, about 6, 1.16 मीटर. सो यहाँ पे इमेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. यू रिमेम्बर दिस, इमेज इज पॉजिटिव. Now what we have to find your nature and size. So you remember that size find करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the height of the object is not given here. अगर height of object नहीं दिया तो डायरेक्टली हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन. एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m is equal to minus v by u. ओके, सो v की जगह हम क्या लेंगे, इधर we can take 1.16 और 15/13 also we can take. So I think 15/13 will be easy. या आप चलिए ये ले लेते हैं minus 1.16 because this formula में minus है and u is given -5. So the m is equal to how much, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0. You will get 0.23 about, right? Minus cancel out, so this is 0.23. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज क्या होगा, बिकॉज मैंने बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन -1 से अगर इट मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन द 1 देन द ऑब्जेक्ट इज डिमिनिश्ड, एंड इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 द ऑब्जेक्ट विल बी एनलार्ज्ड. तो यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन क्या है, 2.3 है, दैट इज लेसर देन 1, सो द साइज विल बी डिमिनिश्ड. अब नेचर क्या होगा, तो देखिए मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव, एंड वी नो दैट अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, नेचर हो जाएगा, तो नेचर होगा वर्चुअल एंड एरेक्ट, बिकॉज वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज एरेक्ट होता है. तो ये हो गए हमारे ये क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व इन दिस वे. Okay, now see the next question. Here the question given, an object 4 cm in size. Size यहाँ पे object का दिया हुआ 4 cm is placed at 25 cm in front of a concave mirror. देखिए यहाँ पे concave mirror mention है, right? The name of the mirror also mentioned here. Of a focal length 15 cm. Focal length दिया हुआ 15 cm. So at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Now find the nature and the size of the image. यहाँ पर याद रखना क्या दिया हुआ है कि what distance from the mirror should a screen placed. अब ये स्क्रीन रखने की बात कर रहा है, अब हमें क्या मालूम क्या फाइंड करना ये समझ में आ रहा है. तो याद रखिएगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है एंड कॉनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म होता है जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जाता है. तो मतलब कि जहां पर एक स्क्रीन होगा द इमेज विल फॉर्म एट दैट पॉइंट ओनली. इट मींस दैट द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड मिरर is called the image distance. तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, और फाइंड करना है नेचर एंड द साइज. द सेम वे में हम जाएंगे, बट यहाँ पे मिरर क्या है, कॉनकेव है, तो जो साइन कन्वेंशन है वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9.2 जो कि पेज नंबर 144 पर दिया है. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. सो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर. फिर ये जो है ना मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस डिस्टेंस पर, इट मीन दिस इज u and u is equal to 25 centimeter. Then what given here, focal length भी दिया हुआ that is 15 centimeter, and then nothing. We have to find v is equal to what, and also क्योंकि साइज फाइंड करना है तो यहाँ पे h डैश फाइंड करना होगा जो इमेज का हाइट होता है. अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे. सो वी नो दैट द जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है. एंड द u इज ऑलवेज नेगेटिव.
focal length is also negative in concave mirror. Convex mirror में positive, but in concave mirror it is negative. Now we have to use the formula, mirror formula, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So we have to find the v, so we can do one thing, 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? अब देखिए, so now substitute the value here. So f की जगह हम क्या डालेंगे, -15, and the minus u की जगह क्या डालेंगे, -25. So minus, तो ये रहेगा -15, but this will be minus minus plus 1 by 25. Okay, now what is the LCM of 15 and 25? So this is 75. So कितने टाइम्स में होगा, 5 टाइम्स. So this is -5 plus 3. Okay, next, so 1 by v is equal to, ये हो जाएगा कितना, -2 by 75. So v क्या होगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे. So this will be 75 by 2 minus. Now when you will divide it, you will get 37.5 centimeter, -1. So image distance कितना हो गया, -37.5. अब हमें क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज. और साइज ऑफ इमेज क्या होता है, so we know that the magnification is equal to minus v by u and it is equal to h dash by h. तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर. h dash दिया हुआ है, नहीं, not given, so h dash will be h dash. h is given how much, 4, and the v is given how much, that is, we can write here 75 by 2 minus, it is already minus in formula, and u will be how much, u is given -25. Okay, next, so h dash by 4 is equal to, so this is minus minus plus, so and this minus, so minus 75 divided by 2 into 25, 25 3 ja, and this will be how much, 2. So now ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, so the h dash will be 3 into 2, it is equal to 6 minus 6 centimeter. Now you can see that कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस इज enlarged, and enlarged image is always inverted. So the nature will be enlarged, sorry, the nature is real because the height of image is negative, so it is real and inverted. Real image is always inverted, not the enlarged image. Enlarged image is not always inverted, but the real image is always inverted. Okay, now the next question. Yes, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. The same what we have done in the question number 1. So this is the convex mirror and the radius of curvature is given here. Radius is given 32. We know that this will be plus only because this is the convex mirror. And so the f is equal to r by 2. It means plus 32 by 2, it is equal to plus 16 centimeter. That's all. Now the next question. Question is given in concave mirror produce 3 times magnified real image. Okay, the first thing, this is magnified and that is enlarged, and real image. Okay, real image is only formed in the concave mirror of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? What given here, ये कह रहा है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर सामने में है, मीन्स u is given -10 centimeter because this is the concave mirror, and इसका जो मैग्निफिकेशन है वो 3 टाइम्स है, राइट? द मैग्निफिकेशन इज गिवन 3 times. This is real image. For the real image, magnification is always negative. So this is -3. Here we know that now we have to find u is equal to what? Sorry, v we have to find because image find करना, so v is equal, what will be the v?
Now we will use the formula of the magnification. So the magnification m is equal to minus v by u. Here m is given minus 3 and the v is not given. The u is given minus 10. This and this will be cancelled out. So v is equal to, by cross multiplication we will get 3 into 10 centimeter. So the v is equal to minus 30 centimeter. It means that the image will form at 30 centimeter in front of the mirror. Here the negative sign means it is in front of the mirror. If the sign is positive, it means it is behind the mirror. Okay. Next question. An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. So find the position and nature of the image. This is the exercise question number 12, page number 160. So what is given here? The first thing, that object is placed at distance of 10, means the object distance is given minus 10 cm, because this is the, this is convex, so that's why this will be plus. And the focal length also, okay, focal length is given 15 centimeter. This will be plus, because this is the convex mirror. And you remember u is always negative, whether it is the concave mirror, convex mirror, or whether it is the lens, any types of lens, concave, convex, whatever, the u is always negative. Now find the position and nature. For position means we have to find, and we have to find also the nature. We will use the same mirror formula, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So here we will substitute here 1 by v, we have to find, so we can write here also. We can do one thing, 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u, by substituting this term, by transposing this term. So the 1 by v is equal to, f is given how much, 15 plus 15, and the u is given minus 10. Okay, now minus minus plus, so this is 1 by 15 plus 1 by 10. What is the LCM of 15 and 10? That will be 30. 15 2 is 30 and 10 3 is 30. So the 1 by v is equal to 5 by 30. Okay, so we have to take the reciprocal to find the v. So this will be 30 by 5. 5 6 is 30. It is equal to 6 centimeter. That means the image will form behind the mirror at 6 centimeter. Now what will be the nature? Because this is the convex mirror, and we know that convex mirror is always from the virtual and erect image. So the nature is virtual and erect. I hope you understood very well. Next question. This question from exercise question number 13, given on the page number 160. The magnification produced by a plane mirror is plus 1. What is given here? That magnification is given how much? Plus 1. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? Plus 1 का मतलब क्या हुआ? Already I told you that when the magnification is 1, it means the size of image and size of object both are equal, same sized. Second thing, that if the magnification is plus, then the image will be virtual. So we can write here, since magnification is equal to plus 1, it means image is virtual, erect and same sized. Okay, why this is plus 1 means why this is same side? The very simple, you can do this is the just for knowledge, this is not the part of answer. Like we know that the magnification is height of image by height of object. Okay, if suppose magnification is 1, it means that height of, also we can write like this. So by transposing this, we'll get height of object is equal to height of image. Okay,
The height of object is equal to height of image. It means the size is same. So, and also we know that the plane mirror is form same size image as we have learned in the first video. Next question. An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror of a radius of curvature 30 cm. Find the position of the image, its nature and size. The same question repeating again. So we can do it easily. Now you are very understanding very well, so you can do yourself as well. So please must try this question. Here u is given 5 centimeter, and we know that u is always negative, so we will put here minus sign. The no, sorry, this is not the u, this is given. We should rub this. Yes, here the given that an object is 5 centimeter length, means the height of object is given 5 centimeter, and then it is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex. So this 20 centimeter mean the object distance. So this is minus 20 centimeter, minus because it is always negative, and the radius of curvature is given 30 centimeter. R is given 30 centimeter. Now can you tell me this will be plus or minus? Yes, obviously this will be plus, because this is the convex mirror, and convex mirror radius of curvature for the convex mirror is always positive, so this is positive. First we will find f is equal to r by 2 means 30 by 2, that is 15 centimeter plus. Now we have to find what is v, and then size, and also we have to find the nature. By using the mirror formula, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. We'll solve this question. So v not given, so we will write 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. Now 1 by f is given 1 by 15 minus 1 by minus 20. Here 20 plus minus minus plus, so we can write. And what is the LCM of 15 and 20? This will be obviously 60. So 15 how many times? 4 ja, yes, 15 4 ja 60, and minus minus plus, and 20 how many times? 23 ja, yes, 23 ja. So this will be 7 by 60, 1 by v. So to find the v, we have to get the reciprocal, so v is equal to 60 by 7. Now you divide this. Can you divide? Tell me the answer. Yes. So 7 8 ja 56, we got the 4, 7 5 ja 50, and again 7 5 ja 35, yes, again 7 7 ja, so on, so 8.57 something. Now what we have to find, the what is the size? Yes, to find the size we'll use the magnification formula. M is equal to minus v by u is equal to h dash by h. Here h dash means height of image, and this is the height of object. So minus v means we can write 8.57 divided by u is given how much? Minus 20. This is minus also, and the h dash is nothing. Hu is given 5. So this will be cut 4 times minus minus plus. Now the h dash is equal to 8.57 by 4. So this is 2.11 something, right? Centimeter. So you can see what is the size here? Diminished, right? Lesser than the height of the objects. Now what will be the nature? Interesting. Yes, tell me fast. So the nature, because this is the convex mirror, so we can directly say nature is virtual. And yes, tell me. Yes, very good. Virtual and erect. Good answer. Next question.
An object of the size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. So at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? Find the size, nature and then. Here the few words are different, otherwise the questions are same, only digits are same and the few words are same, otherwise the question we have done already such type of question. What is given here? The length is given 7 centimeter. Note down please. Sorry, height of object is given 7 centimeter. This will be plus. And what is given? This is the image distance u minus 27 centimeter. And the focal length is given how much? 18. F is given 18. So this will be minus because this is the concave. Now we have to find the V is equal to what, and height of image is equal to what. What we will do here? We will use the mirror formula. So 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, and we have to find V. So 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. Okay. So 1 by F means what is given here? Minus 18. So right, minus 18 minus 1 by minus 27. Okay, so minus minus plus we can write here. What is the LCM of 18 and 27? Yes, 54. So 18 3 so minus 3, and this will be 2 times. Okay, so 1 by V is equal to minus 1 by 54. So V is equal to how much? Minus 54 centimeter. This is the V, right? Now what will be the size? To find the size we have to do the same. Minus V by U is equal to H dash by H. H. Here minus V means minus 54 and divided by minus 27. It is equal to height of image, and this will be 7. So we know that this is 2 times and this will be plus. So the H dash is equal to minus 2 into 7 by cross multiplication of this. So the H dash is equal to minus 14 centimeter. So this is the size of image. Okay, next what will be the nature? Because this is here we are getting the height of image is negative, it means the nature will be real. Real, and real image is always inverted. That's all. So in this way we can do the questions. Okay, that's all. This much only given in this video. This is all the questions taken from the exercise in text and the examples. In the next video you can see the refraction, very interesting topic, refraction, and numerical question related to the refraction, and then the spherical lenses and their applications, spherical lenses and their applications. So this will be the this video will be included all the topics, right? We will cover the whole chapter in these 2 videos, and then after that we'll do the numerical questions from the NCERT textbook, NCERT exemplar and PYQs, and when the sample paper release we'll do also the sample paper questions. That's all for this today. So you must if you have not subscribed the channel, please subscribe it. Thank you so much.